Yes. This meeting is being recorded. So what we were doing, let me tell you, हम लोग we are just at the end of this chapter and we were doing scalars and vectors and somebody shared कि जो मैंने पूछा था ना, is there any software जिसके अंदर टू द स्केल रूलर एंड प्रोडक्टर आता हो? तो वो मैंने देखा था वेक्टर्स वाला, बट दैट वाज मोर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स से इतना रिलेटेड नहीं था। तो लकीली आई जस्ट फाउंड कि हमारा हर दिल अजीज गुड नोट्स 5 जो कि अब अपडेट हो गया है, गुड नोट 6 बन गया है। तो गुड नोट्स में एक गुड ज्योमेट्री होता है, वो मुझे परचेज करना पड़ा एंड मैं उसकी परचेज के थ्रू काम बन गया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। Filled with डू वी energy for physics class today। हैं? आज मैंने अपनी एनर्जी फिजिक्स के लिए फिर बचा के रखी है। हाँ, Completely क्या energetic। बात है भाई, क्या बात। थैंक यू। मैंने भी आज अपनी एनर्जी बचा के रखी है बाय यूजिंग दिस एम्पलीफायर इन माय फिजिकल क्लासेस। ओके, सो tell me one thing. Do we have to go through this addition or subtraction of coplanar vectors once again, or do we move ahead? A small revision please। Revision? Okay, चलो एक करवा देता हूँ, फ्लेक्स भी तो कर लें थोड़ा गुड ज्योमेट्री का। तो अच्छा, वन मोर थिंग, शायद ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बताना भूल गया था, एंड दैट इज दोनों वेक्टर्स का स्केल एक ही होना चाहिए। ठीक है। तो पिछली क्लास में वी मेजर्ड बोथ वेक्टर्स। एक काम करते हैं, एक वेक्टर बस मेजर करते हैं। ये बात पिछली क्लास में शायद बताना आपको भूल गया था, बिकॉज सर आपने बताई भले बताई थी मैंने। अच्छा, तो भले आपके पास 10 वेक्टर हो and if you are using all the vectors all together, ठीक है, whether you are adding or subtracting, they all should be entertained by one single scale. By scale I mean if four centimeter represent 20 Newton, then 1 centimeter कितने को represent करेगा? X. We do cross multiply. तो x किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 20/4 5 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 देन न्यूटन राइट सर 35 सेंटीमीटर, सॉरी 5 न्यूटन होगा, सही कह रही हैं आप। 35 न्यूटन 7 सेंटीमीटर से प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अब देखें, मैंने एक ही स्केल यूज किया है, दैट इज दिस। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। लेट मी ब्रिंग माय रूलर, दिस इज आवर रूलर। ठीक है, टू द स्केल रूलर है एंड इसके मुताबिक आई हैव टू ड्रॉ व्हाट 4 सेंटीमीटर वेक्टर टूवर्ड्स, क्योंकि पहले ए है ना, तो ए में बी को ऐड करना है, यानी ए की टिप से बी का टेल ज्वाइन करना होगा। तो 4 सेंटीमीटर, we can draw 4 centimeter like this.
ठीक है, and this is the tip. Label this vector 20 Newton. ठीक है. Now what do we have to do? We have to make sure that our protractor is at an angle of 30 degrees. तो यहाँ पे 30 डिग्री मार्क किया हुआ है. देखिए मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर रखा 30 डिग्री पे एक मार्क लगा दिया. ये रहा वो मार्क. ठीक है. नाउ आई कैन रिमूव द प्रोटेक्टर and I'll rearrange my ruler like this. You have to move a bit more. Maybe this will work. A bit more. Yes. What do we have to do? We have to draw a vector of 7 centimeters like this. And this represents 35 Newton. Okay. Now what do we have to do? We have to draw resultant. Okay. And that resultant should start from the tail of first vector to the tip of second vector. Maybe this will work. इसको अरेंज करना मुश्किल होता है, बाकी तो परफेक्ट. थोड़ा थोड़ा करूँगा. Yes, fine. So what we are getting around how much? 10.6. ठीक है. This is our final result. ठीक है. And this is the direction, and according to our scale क्या था, कितना आया था, 10.6 का आया था. ठीक है. So 10.6 centimeter. Our scale says 1 centimeter equals to 5 Newton. So 10.6 centimeter equals to resultant. What we'll do, we'll cross multiply. So R will be equal to 5 Newton multiplied by 10.6, which will be 53 Newton, sir. 53 Newton. This is how we found out the resultant. Now let's find out the direction. What is the direction? Around 19 degrees. तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ हम लोगों ने दिखा दिया that this is how you can do or you can solve your
addition of vector. Similarly, for the case of subtraction, जैसे नीचे दिखाई दे रहा है, since you can see the negative sign is with B, Sir? I'll do the opposite direction for B. Yes, beta. Sir, when they ask us to show the direction, don't we have to write like north? You can, or you can simply write 90 degrees with x-axis. 19 degrees with x-axis. That's it. So we don't have to write like northeast or something. No, or you can say that if you are interested in answering this question like this, east, north. So you can say east 19 degrees north, east 19 degrees north. Or you can also say north 71 degrees east. Okay? All right. So we don't have to do this. We can just write 19 degrees as it is. 90 degrees with x-axis is perfect. Thank you, sir. Okay. Welcome. So, yes. एक मिनट रुकिएगा. सही है. तो ये हमारा हो गया. आई थिंक रिकॉल हो गया. आगे बढ़े. और जस्ट फॉर द नेगेटिव आपने उस वेक्टर को -90 पे बनाना होगा. मतलब व्हाट विल डू नाउ फॉर द केस ऑफ, मैं रफली बनाकर दिखा देता हूँ. फॉर a minus b, so this will be a and this will be minus b, because the direction is now opposite as it has minus sign. So, sir, we will just change the direction of the other vector in Not negative change, vector. reverse the direction. Okay. Okay, and now we can find out the resultant. थोड़ा सा और करना होगा, बस इसको this will work. How will it will work? So the answer right now for us is around 4, around 4 centimeters. This was our first vector. This is our second vector. So the resultant starts from the tail of first vector to the tip of second vector. And as we can see, it's around 4 centimeters. तो हमारा स्केल क्या बताता है? 4 centimeter is equivalent to 20 Newton, जो हमने स्केल बनाया था. ठीक है? And we can see the direction. क्या आ रही है डायरेक्शन? If we can look at direction, so the direction is, अगर आप with respect to x axis ही बताना चाह रहे हैं,
You can see like this. तो ये पूरा तो 180 डिग्रीज हो गया एंड दिस वन इज हाउ मच, ये आ रही है हमारे पास अराउंड 62. तो 180 plus 62, what will it be? 180 plus 62, 242. 242. Yes, so 242 degrees with x. ठीक है. इसके अलावा you can also say in terms of axis that this is west, this is south. You can also say 62 degrees west, 62 degrees south. ठीक है, आप इस तरह भी इस डायरेक्शन को लिख सकते हैं. दैट इज हाउ आपका ये कंप्लीट हो गया. So, sir, the angle is 242 here. Yes, from this way, because this यहाँ से यहाँ तक 180 और ये 62 है. 180 plus 62 is 242. Okay. तो बेटा ये हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे. नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? आगे बढ़ते हैं. क्लियर है यहाँ तक? रिवाइज हो गया? Yes, sir. तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू? We need to understand if our vector is in any arbitrary direction. For example, this vector is maybe having an angle of 45 degrees. So it's neither in y-axis, neither in x-axis. But we want to have the components that it contributes in x and y-axis. तो x-axis में इसका contribution क्या है? यहाँ तक. y-axis में इसका contribution क्या है? यहाँ तक. ठीक है. That is how मैंने यहाँ पे दिखाया. This is the contribution along x-axis. Since this force is F, I said this as Fx, component of force F along x-axis. And this is the component of force along y-axis Fy. While the force is making an angle theta with respect to x-axis. ठीक है. So अब through that you can also do this. कि आप यहाँ पर ये वेक्टर उठाएं और उस वेक्टर को उठा के इस तरफ बना दें. ठीक है. And you do something like this. So it will look like a right angle triangle. जैसे मैंने फोर्थ डायग्राम में किया हुआ है. ठीक है, जैसे ये वाली डायग्राम में किया हुआ है. And when we have a right angle triangle, we have liberty to apply one Pythagoras theorem to find out the magnitude of this vector. Two, we can apply trigonometric ratios in order to have the angle. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. So we can resolve our vectors into the x component and into y component just by looking how much the vector is contributing along x-axis. For example, if I have another vector like this, so it contributes this much along x-axis. This will be fx. It contributes this much along y-axis. This will be fy. Okay. So this is how you'll be getting, or you'll be knowing how much the contribution is there. Okay. So how many trigonometric ratios by default do we have? Three. मैं मानता हूं दो हैं Sir, you बस. mean sine, Okay. cos, tan? Sin cos tan, क्योंकि tan भी जो है ना sin cos से ही बनता है. Tan is equivalent to sin upon
cos. ठीक है? So, but in general, we have 3 sine cos 10. Do we know the phrase to remember the trigonometric ratios? SOHCAHTOA. Okay, you can use SOHCAHTOA. So, ka toa. Yani sine equals to opposite over hypotenuse. Cos is equivalent to adjacent over hypotenuse. And tan is equivalent to opposite over adjacent. Okay? This is how you can write SOHCAHTOA. Okay? The other way, if you are not using adjacent or opposite terminologies, you have just a minute. So you have the other replacement, that is perpendicular and base. Okay? So for that, we have a phrase, some people have curly brown hair through proper brush. Okay? So through this, we can also learn. Some people have, and it's sine equals to perpendicular over hypotenuse, or it's opposite over hypotenuse. Curly brown hair, cos equals to base over hypotenuse or adjacent over hypotenuse. Through proper brush, it's tan theta equals to perpendicular upon base or opposite over adjacent. But I used to have one funny way to remember that. One of the teacher of mine who used to teach physics in my school when I used to be a student, उन्होंने एक बड़ा गंदा तरीका सिखाया था मैम. और वो क्या था भाई? पप्पू भाई पप्पू हरी हरी बत्ती. So this one is cos. This one is sine. So sorry, this one is sine. This one is cos. And this one is tan. So इस तरीके से मुझे याद हुआ था. Yeah, dead. So it's up to you. आप SOHCAHTOA से याद रखें. Some people have curly brown hair through proper सर ये brush. आपकी टीचर ये मेरे टीचर थे. हाँ, हमारे बच्चे भी तो इंटरनेशनल हैं. लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट, बल्कि तुम्हारी क्लास की ही अमतुल बसीर, आई एम टॉकिंग अबाउट बरीरा बसीर, उसने याद किया था साइन पागल है, कुत्ता भौंकता है. बच्चे अपने तरीके निकालते हैं यार. पाकिस्तानी अवाम जो है ना सबसे ऊपर है जुगाड़ में. जो बात सर सो अब मुझे आपको बताना है कि हाउ द करेक्ट वे टू मेमोराइज SOHCAHTOA or this one. These are the international ways. Don't follow पप्पू भाई पप्पू और हरी हरी बत्ती और साइन पागल है कुत्ता भौंकता है. These are the international ways. एक ये वाला और एक SOHCAHTOA. ठीक है? ऑलराइट सर का ठीक है. चलो, base, what is base or adjacent is from where the angle is making. Like in my case, this is base. जहां से एंगल बनता है, that is base. Hypotenuse 90 डिग्री के सामने वाला. ठीक है? And the remaining is perpendicular. Once again, फिर दोबारा सुने. From where the angle is forming, this one is base or adjacent. ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाला and the biggest side is hypotenuse. The remaining is perpendicular or opposite. ठीक है बेटा? This is what I have written here. So AI is telling me I have written it down the wrong spelling, hypotenuse.
ओके, चलो ठीक करो, देखते हैं इनकी राइटिंग कैसी है। कलर तो चेंज कर दिया अंकल। नहीं, छोड़ो, ऐसे ही ठीक है। ओके, सो अब बेटा देखें, मैं आपको दो तरीके कार बता रहा हूँ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। जो एफ एक्स है और ये एफ वाई, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंड दैट इज एफ एक्स। यू वांट टू फाइंड आउट एफ एक्स, whatever you need to find out, भले आप एफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हो, भले आप एफ वाई फाइंड आउट कर रहे हो, you need to include your actual vector, ठीक है। अच्छा, those who are compatible with adjacent and opposite, उनके लिए लिख देता हूँ ये। So whatever you are working with, whether you are working with fx or fy, x component or y component, you need to include the actual resulting vector. So we need to find out fx and we need to have f, यानी is there any trigonometric ratio जो बेस और हाइपोटेन्यूज को कैरी करता हो या एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज को कैरी करता हो? Cos. Cos. Yes, sir. Cos. Cos. So what I do, I write cos theta equal to base upon hypotenuse or adjacent over hypotenuse. Here the base or adjacent is fx and hypotenuse is f. We need to find out the value of fx. So f divide हो रहा है, ऊपर जाके multiply हो जाएगा, and hence we get fx equals to f cos theta. Okay. Now we need to find out the value of fy. So we need to have our original vector and fy. Any hypotenuse or perpendicular, या opposite or hypotenuse, which trigonometric ratio? Sine. Sine. So now sine equals to perpendicular upon hypotenuse fy over f. So fy will become f sine theta. Okay, this is how we get the values of fx and fy. Fx is f cos theta, fy is f sine theta. But this is where a student make one of the biggest mistakes. पता है क्या गलती करते हैं बच्चे? वो एक बेंचमार्क बना देते हैं। और क्या होता है वो बेंचमार्क? Whichever component is along x-axis, its cos function. Whichever component is along y-axis, its sine function. It's wrong. ऐसे बेंचमार्क ना बनाएं जिनका कोई मकसद ना हो, जिनका कोई फायदा ना हो, जिनकी बुनियाद खोखली हो, ऐसे कोई भी आप लोग बेंचमार्क्स ना बनाएं. I'm relating this to your practical life as well, your life as well. उन लोगों को बेंचमार्क ना बनाएं जो बेंचमार्क बनने के काबिल नहीं है. मतलब सॉरी टू से बट हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, उसने बिना वजह के सेलिब्रिटीज बना दी हैं. आई डोंट वांट टू नेम एनी वन ऑफ देम, बट most of them do not deserve to be celebrity. If you want to follow someone by heart and soul, तो उस काबिल होना चाहिए. Like most of the time student ask me, सर फला फला बंदे का वीलॉग देखा, सर आपने देखा उस बंदे ने उसको किस तरह रोस्ट किया. ये तो जिंदगी का मतलब मकसद नहीं होना चाहिए. ठीक है, फॉर फन पर्पस आप देखें, बट दिस शुड नॉट बी the way you idealize or symbolize someone. है, back to the topic. Benchmark की Agreed, बात हो sir. रही थी.
बेंचमार्क की बात हो रही थी भाई। तो बच्चा क्या गलत बेंचमार्क बनाता है? विच एवर component of vector is along x-axis, this is cos function. Whichever component is along y-axis, this is sin function. चलो बच्चे के बेंचमार्क को आपकी आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाता हूं। अब यहां पे मैं एंगल अलोंग एक्स एक्सिस ले रहा था, अब यहां पे मैं एंगल अलोंग वाई एक्सिस ले रहा हूं, ठीक है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट एफ एक्स। व्हाट डू आई नीड टू हैव? द Sine. ओरिजिनल वेक्टर and this. The perpendicular hypotenuse, yes, sine में आता है। So what I'll do, I will write down sine theta equals to perpendicular upon hypotenuse. So here, अच्छा, let me tell you why this is perpendicular. मैंने बताया था जहां से एंगल बनता है वो बेस होता है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है hypotenuse, and the remaining one is perpendicular. That is why. So perpendicular is fx f. तो कहाँ है वो बच्चे जिन्होंने अलोंग एक्स एक्सिस आने वाले को कॉस का फंक्शन बनाया था? उनका बेंचमार्क उनकी आंखों के सामने कमजोर होता हुआ, टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। माजरत, नो हार्ड फीलिंग्स। Similarly, we need to find out fy. We need to have the original vector and the fy, and the base and hypotenuse, and it's cos. Cos. Cos theta equals to base upon hypotenuse. Now we have base as fy and hypotenuse as f. So fy becomes f sin theta. ठीक है भाई? Sir, cos नहीं होगा। मैं चेक कर रहा था how much you guys are attentive. You prove me right. Thank you very much. ओके, तो बेंचमार्क को टूटते हुए देखा, बिला वजह के बेंचमार्क नहीं बनाने हैं। बच्चा बोलता है सर ठीक है, बेंचमार्क हमारा तो तोड़ दिया, बट अब मुश्किल हो गई ना, अब कैसे याद करें हम? रुको जरा, सब्र करो, मैं बताता हूं क्या तरीका है। भाई, जहां से एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस का होगा। देखो, एंगल कहां से बन रहा है? यहां से। देखो एफ एक्स कॉस का है। एंगल कहां से बन रहा है? यहां से। देखो एफ वाई, सॉरी, एफ वाई कॉस का है। सिंपल इज दैट, दिस इज द राइट बेंचमार्क, ठीक है। सो फ्रॉम वेयर द एंगल इज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, थैंक यू अफीफा, फ्रॉम वेयर द एंगल इज फॉर्म्ड, this is the cos function and the other one is sin function. End of discussion. ठीक है भाई, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। निकाल दें दिमाग से, एक्स एक्सिस में cos होता है, y एक्सिस में sin होता है। From where the angle is formed, this is the cos function, and this will help you a lot, believe me, in university level, till university level, even A2 में जब आप आते हो, मैं आपको A2 का एक लेक्चर दिखाता हूं, मोशन इन अ सर्कल। जगह जगह ये देखें, हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को देखना है। अब देखो यहाँ पे एंगल कहां से बन रहा है? वाई एक्सिस से। बच्चा अगर वही अपना घिसा पिटा बेंचमार्क लेकर जाता, पूरा सवाल गलत हो जाता। फ्रॉम वेयर द एंगल इज फॉर्म्ड, देखो एंगल कहां से बन रहा है? यहां से, कॉस। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, चलो। एंगल कहां से बन रहा है? यहां से, कॉस। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, एंगल कहां से बन रहा है? यहां से, कॉस। सिंपल इज दैट, जहां से एंगल बने वो कंपोनेंट कॉस का, ठीक है भाई।
अब तो नहीं भूलोगे? Yes, No, sir. sir. परफेक्ट। सो एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। पता है क्या? चैप्टर खत्म हो गया। 24 आउट ऑफ 24 पेज नंबर अभी शायद यहाँ पे अपेयर होता है, ये रहा। चैप्टर इज एंडेड। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक some practice related to scalars and vectors. ठीक है भाई? So scalars and vectors की चले practice शुरू करते हैं। For that I have to go towards the previous session. सर उस डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करवाया था, aren't we going to use that in this class? Yes, वही कर रहे हैं। So this is basically a homework जो कि will turn out to be a class work. तो मैंने आपसे बोला था आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आपने somebody just I mean I felt somebody put a hand। कौन है? Bhutto, is that you? So तो ये हमारा आई थिंक मैंने आप लोगों के ग्रुप पे सेंड किया था और आई आस्क्ड यू कि इट्स बेटर इफ यू हैव अ प्रिंट आउट बिकॉज यू कैन मेजर योरसेल्फ। डू हैव अ 30 सेंटीमीटर रूलर। 30 सेंटीमीटर रूलर ये वाला होता है, ठीक है? ये बड़ा वाला 30 सेंटीमीटर रूलर। डू हैव 30 सेंटीमीटर रूलर alongside with sharp pencil, razor, protractor, जिसे प्यार से आप डी कहते हैं। चलें शुरू करते हैं। Explain the differences between quantities, distance and displacement. How do we define or how do we distinguish between distance and displacement? Sir, distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Simple as that. Yes, displacement is vector, distance is scalar. ठीक है? Since we are dealing with vectors and scalars, तो उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं। Distance is scalar quantity and displacement is a vector quantity. State Newton's first law of motion. How? अभी तक पढ़ा नहीं है वैसे आपने, but if you have any idea, Sir, I'll be happy to hear. जी अमल। that any object will continue at rest or at constant velocity unless acted upon by a resultant force. Perfect, perfect. Confirm जन्नती हैं अमल आप। So Amal said, if a body is at rest, it will remain at rest. If a body in motion, it will remain in motion until it is acted upon by an external force. So since it's against 1 mark, so let me summarize whatever this Newton's first law
state. Body will continue being in its state of rest slash motion until it is acted upon by an external force. ठीक है? Two tugs pull a tanker at a constant velocity in the direction xy. मतलब इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है. ठीक है? If it's not visible, इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, xy की डायरेक्शन में. Tug 1 pulls the tanker with a force of T1 at 25 degrees with respect to x-axis or with respect to xy. तो tug 1 जो है वो पुल कर रही है फोर्स T1 से 25 degrees with xy. जबकि tug 2 pulls tanker with a force of T2 at 15 degrees with xy. The resultant force R due to the two tugs in this. ये resultant force है. ठीक है? Okay. In the direction of xy. Whatever the resultant force will be, it will be in the direction of xy. एक मिनट दीजिएगा मुझे. Okay. So by the reference to the forces acting on the tanker, explain how tanker may be described as being equilibrium. वैसे तो equilibrium का टॉपिक हमें आगे पढ़ना है, but it's a very general topic. We can answer that question. How that tanker will be in equilibrium. So is it because the forces The will cancel? upward force is equals to ground. जी So हमसा, sum of forces will be 0. resultant force will be 0. Okay. जी हमसा, what you added? The upward force will be equal to the downward force. Yes. But in this case, we can say that the rightward force or जैसे हमें बताया नहीं है, resultant force xy direction में. Okay. The resultant force xy in the resultant force in the xy direction will be balanced by water resistance. ठीक है? As the tanker is moving through the water. ठीक है? And water will provide some friction. Okay, so we can say that the resultant force is balanced by the backward force provided by water resistance. And the last part which Amal added, resultant force will be 0. The resultant force are along xy is balanced by water resistance
in the opposite direction. Hence, net force is equal to 0 bodies in equilibrium. ठीक है? उर्दू की एक कहावत है, दुनिया मकफाते अमल है। क्या कोई बताएगा इसका क्या मतलब होता है? टिट फॉर टैट इंग्लिश में कहते हैं। एनीवन? सर जैसा करोगे वैसा करोगे। एग्जैक्टली। श्योर। हमने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में अराउंड 200 के टारगेट से हराया था, 10 विकेट्स ले ली थी। आज देखिए हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। यू नो व्हाई? हमने मजाक उड़ाया था उनका, हर लम्हे उनका मजाक उड़ाया था, तो आज हमारे साथ ऐसा हुआ। और मैंने तो दोपहर में ही बता दिया था मुस्तकीम भाई को कि भाई पूरे 10 विकेट से हारेंगे हम, हमारे बड़े गोल हमारे सामने आएंगे, हम बहुत चौड़े में आ रहे थे। कभी कभार we have to keep our feet on the ground while our eyes looking at the sky. तो हमारी आंखें तो आसमान पे थी, लेकिन हम हमारे जो पाँव है ना, वो भी जमीन पे नहीं थे। तो मे बी बिलाल, शायद ये एक्सपीरियंस ओवर कॉन्फिडेंट जो हो गए थे हम एज अ नेशन, या फिर प्लेयर्स अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो उनके लिए रियलिटी चेक होगा कि ब्रो सामने वाली टीम भी खेलने आई हुई है, इंडिया है, छोटी मोटी टीम नहीं है। हमने बच्ची टीम समझ लिया था, 1-2 मरतबा हरा दिया था उन्हें। तो खैर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट फिगर 1.2 टू ड्रॉ द ट्राइंगल फॉर द फोर्सेस आर T1 एंड T2। ओके बेटा, तो व्हाट आई डू, मुझे एग्जामिनर ने रिजल्टेंट की वैल्यू बताई है, ठीक है, दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, and he is asking us to draw vector triangle, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to measure this resultant, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू पता है, रिजल्टेंट बनाकर भी दे दिया, लेट्स मेजर। क्या वैल्यू है? एग्जैक्टली 12.5। अगर आप में से किसी ने प्रिंट निकाला है, डू मेजर, इट शुड बी Sir, I'm getting 11.5. Like 11.5, 11.49, close to 5. Yeah. 12.2, if I saying 12.2, why? Sir, it's almost around 12.2. सर मेरे तो 12.5 आ रहा है 12.1 or 12.2 इसका 12.5 आ रहा है। मेरा सर। मेरा दैट कुड बी द रीजन। हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं ना, वो शायद थोड़ा बहुत श्रिंक कर देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्चुअल पास पेपर की कॉपी के ऊपर मैंने स्केल्ड रूलर रखा है, खरीदा हुआ रूलर, पता नहीं 1900 रुपए का था, कितने रुपए का था, गुड ज्योमेट्री। सो दैट इज 12.5। आपका 12.2 आ रहा है, यूज दैट वैल्यू। दीना, इफ यू आर गेटिंग 12.5, परफेक्ट, सही है। तो चले, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जस्ट टू रिमेम्बर, ठीक है। और बेटा इस तरीके से हमारा स्केल बन गया। स्केल पता है क्या बना? दैट 25 exponent 3 Newton is equals to 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो sir. इसको यहीं, जी बेटा, Sir, आगे अच्छा sir. इसको यहीं पे रखते हैं। अब पहले मैं बना रहा हूँ T1 एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्रीज। ये देखें, where is 25 degrees? ये रहा। And what I'm doing, I'm extending this as long as I can. ठीक है? This is what 25 degrees, and this is T1 in this direction. ठीक है? Label this as T1. ठीक है? Similarly, this one is having an angle of 15 degrees. ठीक है? तो बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर ये एंगल 15 डिग्रीज है तो ये एंगल क्या होगा? ये वाला Sir, 15 ही होगा. 15 ही होगा। Z ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है ना, अगर ये 15 है ये भी 15 होगा। इसे ऑल्टरनेटिव एंगल्स भी कहते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट फॉर द केस ऑफ व्हाट डू वी से P2, placing projector here, and now we are measuring what? 15 degrees. ये आ गया, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास P2, सॉरी डायरेक्शन उल्टी बना दी, which is at 15 degrees. और ये काम करने के बाद कीप वन थिंग इन माइंड, आई मीन ये काम करने से पहले भी कीप वन थिंग इन माइंड, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनती है। तो जो आपने एक्सिस बनाया है उसे रब कर दें। ठीक है? तो ये आपका वेक्टर ट्रायंगल बन गया। ठीक है? एंड नाउ ये सवाल कंप्लीट करेंगे। चलो अब वैल्यूज निकालते हैं। यूज योर वेक्टर ट्रायंगल टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। चलो T1 की मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। क्या बात है, परफेक्टली अलाइन है। तो बेटा देखिए मेरा T1 कितना आ रहा है? इट्स अराउंड 5। Sir, सही मेरा है? 4.9. तो T1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। व्हाट वी डिड, हमने यहाँ पे अपनी वर्किंग की। तो वर्किंग कैसे की? 25.0 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन बराबर था इसके 12.5 सेंटीमीटर के। तो 5 सेंटीमीटर बराबर होगा T1 के। व्हाट वी डिड, क्रॉस मल्टीप्लाई। T1 will be equals to
25.0 exponent 3 multiply by 5 divide by 12.5. क्या आएगा T1? 10,000. 10 न्यूटन. ठीक है. इसी तरीके से we'll measure the T2. And what we are getting? Around 8.3. See? तो हम once again इसको benchmark बनाते हुए इसको solve करते हैं. The same way we did this. 25.0 exponent 3 Newton is equivalent to 12.5 centimeter. Then T2 is equivalent to 8.3 centimeter. We did cross multiplication. T2 will be equal to 25.0 exponent 3 multiplied by 8.3 divided by 12.5. Yes. 16,000. Sir, T1 is G. T1 is 10,000, not 10 newtons. 10,000 rupees. We don't have to write the unit. And this is 16,000. 16,600. 16,600. Then by this, we can say that this. Okay. And that is how we completed this question. Okay, beta? Right. This is why we needed the printouts ताकि आप proper इसे measure कर सकें. Someone was saying something? Okay. Clear है बेटा? All clear? All clear, Yes, sir. sir. जी सर. Perfect. चलो. So इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक सवाल और करवाऊंगा. ये तो मेरे होमवर्क वाली शीट है. उसके बाद we'll go towards past papers and do more questions. ठीक है? चलो. तो दिस इज इट बेटा. आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स का जो रिमेनिंग सेक्शन था वो कंप्लीट किया और उसके बाद वी डिड वन पास पेपर जो कि होमवर्क था, जो कि क्लास वर्क बन गया. एंड दैट इज हाउ हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया. अब कुछ पास पेपर और करेंगे. तो हाउ डू वी फाइंड वॉल्यूम व्हेन डायमीटर इज गिवन? ओके, अमल दिखाता हूँ मैं आपको. ये देखो, इसका वॉल्यूम शेप बताओगे अमल? Yes, sir. Just one second. Sphere. सॉरी, Sphere. sphere. Okay, the volume of a sphere is
4/3 pi r cube. Now what do you do? R will be broken down into diameter upon 2 and the cube will be present. So V will be equals to 4/3 pi d cube. And 2 का cube क्या होगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8. Now 4 1s are 4 2s are. What will be left? Pi d cube upon 3 multiplied by 2, 8. ठीक है? All right, sir. So Sir, we'll it's just use the 6. formula. जी बेटा. It's 6. Sir, 3 into 2, 6. Oh, sorry. ठीक है? चले. चलो ख्याल रखिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. हाफिज. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज.